And today we are making cream of spinach soup. Today is day 9 of our 14 days soup challenge. इस सूप को बनाने के लिए एक पैन में लेंगे थोड़ा सा बटर, इसमें डालेंगे अनियन एंड गार्लिक। अब हम अनियन को तब तक सॉटे करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। अब इसमें मैं चॉप्ड स्पिनच के पीसेस डाल रहा हूँ। विल कवर दिस पैन एंड लेट स्पिनच कुक फॉर अ मिनट। अब जैसे ही आपका मिक्सचर ठंडा हो जाए, वी विल ग्राइंड दिस इनटू अ स्मूथ पेस्ट। अब एक दूसरे पैन में हम लेंगे थोड़ा सा बटर एंड डालेंगे इसमें व्हीट फ्लावर। इस व्हीट फ्लावर को हमें इसको सॉटे करना है जब तक कि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। इसमें मैं थोड़ा मिल्क डाल रहा हूँ एंड आई विल लेट इट सिमर टिल इट टर्न क्रीमी इन टेक्सचर. Now add your salt, pepper and sugar. Mix everything and now it's time to finally add your spinach puree. Now give this entire mixture a nice boil. And finally, we will finish this soup with a touch of fresh malai. Your warm and comforting cream of spinach soup is ready. Guys, this tastes really good. So definitely try this recipe out. Our day 9 challenge is done. See you tomorrow with a new soup recipe.